Hello dear students, welcome in this online class of Standard 11. Today we are going to discuss the chapter 11. Discuss means कि we are going to continue because we have already started this chapter yesterday and today we are going to continue this chapter 11. This is the topic that how many types of, yesterday we have discussed about photosynthesis. And after that we had studied type the light reactions and dark reactions also in yesterday class. But photosynthesis completes in two phases. One is light reaction and dark reaction. We had studied definition, we had studied equation, then many things we had studied yesterday. Today we shall study that pigments, how many types of pigments are involved in photosynthesis. First of all, what is photosynthesis and what is, we have to revise our class before going to start the new class. We have to revise the previous class also. Yesterday we had studied the definition of photosynthesis. You will read yourself fast because you know that syllabus is very much too much syllabus is there. Then you have to study this topic, the equation, and this is the type or the phases of reactions, light reactions and dark reactions, the products of light reactions, that is also essential, you know, like ATP and NADPH2, NADPH. Now we come about chloroplasts. Chloroplast having the three parts, grana, stroma and stroma lamellae. The product of light reaction used in dark reaction. These were the different things that we had discussed yesterday. Today we are going to start our class, and today is 11th October 23, and I am going to start about pigments. What are pigments? Pigments, we can say, the substances found in leaves that absorb sunlight of various wavelengths. So pigments are responsible, we can also show, due to pigments provide appearance, color appearance of leaves is due to the presence of pigments. We have to understand that green plants, green leaves are always green in color, generally green. But sometimes we see that there are variation in the green color, maybe yellowish green, maybe bluish green. Then what is the factor for that? There are different pigments of chlorophyll A, chlorophyll B, carotene and xanthophyll. So we can say that it is bluish green. Chlorophyll, you can say it is yellowish green. Xanthophyll, you can say yellow, and it is yellowish orange type, sometimes reddish type also. So these types of colors, these type of pigments are the main factors to provide colors to the leaves. So we come on the topic now again. Like when you do chromatography, पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है उसके थ्रू पता चलता है लीफ का पिगमेंट्स कैसे होता है. इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है जो आपको करने से पता चलेगा हाउ यू कैन डू क्रोमेटोग्राफी. तो देयर आर 4 पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, xanthophyls and carotenoids.
yellow to yellow orange, xanthophyll is yellow, chlorophyll is yellow green, and chlorophyll is bright or blue green. Okay. If we see the, if we go further, we shall find Vibgyor. Vibgyor is also a very common word for all of you, I think. These have 7 colors: V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, and R for red. So if you find that where is the maximum absorption of sunlight, the wavelength at which maximum photosynthesis occurs in a plant, 11.3, 11.3 का B क्या दिखा रहा है? ये 11.3 की डायग्राम जो हमें दिखा रही है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है। जहाँ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वहीं पे ऑक्सीजन का रिलीज भी ज़्यादा होगा. So it's measured by oxygen release, that maximum absorption of wavelength, maximum absorption of the wavelength is occurring on that phase. Can you see that wavelength at which there is maximum absorption by chlorophyll A? तो chlorophyll A का सबसे ज़्यादा absorption किस में होता है? ब्लू और रेड रीजन्स में. You can see that we can conclude that chlorophyll A is the chief pigment. Chlorophyll A is the chief pigment associated with photosynthesis. I have also discussed one thing, that there are 4 pigments in which we have to know that chlorophyll A is the king pigment. We can say it is the king pigment. It is wearing the crown. But these chlorophyll B, carotene, and xanthophyll, these are also accessories pigment. Chlorophyll A, B, chlorophyll A, chlorophyll A, the chief pigment है ये. इनको हम चीफ में बना के रखे हुए हैं. और आगे जो है क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जैंथोफिल, इन सब को जो पिगमेंट हैं ये इनको लोग एसेसरीज पिगमेंट कहते हैं, जो उनको हेल्प करते हैं. एसेसरी पिगमेंट हेल्प करते हैं. दे एब्जॉर्ब द sunlight of various wavelength, either of P700, either of P680, so P680 और P700, they absorb it. क्लोरोफिल ए को ये प्रोवाइड करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं एसेसरी पिगमेंट और इसको प्रोवाइड कर देते हैं क्लोरोफिल ए को. तो क्लोरोफिल ए इज द रिएक्शन सेंटर. क्लोरोफिल ए ही रिएक्शन करता है, एक्शन में रहता है. और क्लोरोफिल बी और कैरोटीन, चैंथोफिल, तीनों इनको हेल्प करते हैं. क्लोरोफिल ए इनको बहुत ही आगे बढ़ाएंगे फिर रिएक्शन को, तो हम लोग आगे बुक में देखेंगे कि क्या होता है. तो वी कैन सी हियर graph also show the spectrum that photosynthesis take place at the other wavelength of visible spectrum. Chlorophyll is the major pigment. Chlorophyll is the major pigment responsible for trapping light. Light को जो trap करता है वो सिर्फ chlorophyll. Other thylakoid pigments like chlorophyll B, xanthophyll, and carotenoids are called accessory pigments. I have already discussed. Also absorb light and transfer the energy to chlorophyll A indeed. So we can say that not only absorb enable the wide range of wavelength of incoming light to be utilized, but they also protect chlorophyll A from photooxidation. This is also very important. क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और जैंथोफिल जो हैं, ये तीन पिगमेंट, ये एक तो एब्जॉर्ब कर देते हैं लाइट को और इसको ट्रांसफर किसको कर देते हैं, तो क्लोरोफिल ए को दे देते हैं. तो यू अंडरस्टैंड इट बेटर. क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स एंड जैंथोफिल, ये तीनों जो हैं, these 3 pigments absorb the light of various wavelengths and they transfer it to chlorophyll A. अब ये क्लोरोफिल ए को सारा रिसोर्सेज कहाँ से जनरेट हुआ है, तो ये तीनों पिगमेंट से हुआ. अब क्लोरोफिल ए को तीसरा और भी काम क्या करते हैं ये, दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन. Now what is light reaction? If we are going to discuss light reaction, then we shall see that light reaction में आप क्या पढ़ेंगे कि light reaction में हमारे पास 2 complexes हैं, LHC, light harvesting complex. Light harvesting complex 2 प्रकार के होंगे. One will be PS2 and one will be PS1.
PS2 और PS1 की खासियत है, PS1 absorbs the sunlight of wavelength P700 while PS2 absorbs P680 wavelength. इनका जो है PS2 का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है ये P680 वेवलेंथ के सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन PS1 एब्जॉर्ब करेंगे P700। सीक्वेंस ऑफ एक्शन क्या है, तो PS2 पहले वर्क करता है और PS2 उसके बाद वर्क करता है। तो हाउ डज इट वर्क्स, तो अगर हम देखेंगे प्राइमरी एक्सेप्टर्स किस तरह से काम कर रहे हैं, यू कैन फाइंड हियर द फोटोन इज द, we can say unit of sunlight, unit of sun rays, one unit of sun rays we can say, and sun rays, तो ये जो फोटोन है यूनिट ऑफ सन रेज दैट इज एब्जॉर्ब्ड, you can see. Now when it is falling upon the light harvesting complex, this is the light harvesting complex, here they are absorbing the light and they are transferring it to the light harvesting complex electron acceptor, we can say it primary acceptor, primary electron acceptor. So this is the light harvesting complex. This photon, this is called the reaction center. The first, this ray will be called as reaction center. So first of all, light will be taken like in this way. If it is taken in this way, then it is transferred to another and another, and then it comes to this place. Here it will be transferred towards the primary acceptor. That primary acceptor will accept the electron, the photon, and becomes excited, and that is called the light harvesting complex. Light reactions also, in light reactions we shall also study light reaction consists of 4 stages. पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा। तो लाइट रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। दूसरा स्टेप होगा वाटर स्प्लिटिंग, और तीसरा स्टेप होता है ऑक्सीजन रिलीज। चौथा स्टेप प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ energy bond like ATP and NADPH. So लाइट रिएक्शन की समरी यही है, आप बच्चे लोग इसको याद रखिए। लाइट रिएक्शन की समरी जो है बस 4 पॉइंट में कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, दूसरा वाटर स्प्लिटिंग, तीसरा ऑक्सीजन रिलीज, चौथा होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। अब लाइट रिएक्शन जो है भी ये लाइट रिएक्शन भी 2 फेजेज में कंप्लीट होता है। एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। Now you can understand what is cyclic photophosphorylation.
साइक्लिक को पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर हम नॉन साइक्लिक को भी पढ़ेंगे। पहले हम नॉन साइक्लिक ही पढ़ लेते हैं। नॉन साइक्लिक, non-cyclic photophosphorylation, also called as Z scheme of photophosphorylation। क्यों भाई जेड स्कीम क्यों कहते हैं? तो इसमें आप देखोगे कि किस तरह से डायग्राम बनेगा, डाउन हिल, अप हिल देन डाउन हिल देन अगेन अप हिल देन डाउन हिल, इस टाइप का जो डायग्राम बनता है, एंड इट मेक्स अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स लाइक जेड इफ वी सी इट, तो इसको हम लोग जेड स्कीम भी कहते हैं। Now, if we see the book, then you have understood that light reactions or the photochemical phase like water splitting, oxygen release, light absorption, first phase, second is phase water splitting, third phase is oxygen release, fourth is formation of high energy chemical bond like ATP and NADPH। ये जो प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन का, ये केमिकल फिर डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होगा। In addition to these pigment, to these steps, protein complexes are also involved. So light harvesting complex LHC has two types, PS1 or PS2. You all know these things. You all have to understand these things very well. If you are not knowing, then understand, read the book time and again, and you will find it very easy. I am here to make it very interesting because this topic physiology is so fascinating branch that when you start reading, you will find it very easy. Make it easy, understand, and if you have any doubt, you can comment me. If you have any doubt, I will again make a video for you. If you have any problem, you can write in comment. So don't make a gap. We are here to make the topic very easy. The pigments are organized into two discrete photochemical complexes like PS2 and PS1. I have told you. So LHC जो है क्या? What is LHC? The LHC भी बहुत से 100 of pigment molecules से compose किया हुआ है, and they are bound to proteins. You understand that each photosystem has all the pigments except chlorophyll A, and this harvesting system is also known as antenna. You can say antenna. These pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing wavelength of light. I have told you first that PS2 has absorption maxima and it is called P680, while PS1 is the reaction center. The chlorophyll A has an absorption peak at P700, hence it is called P700. You can say P700. Absorption peak 700 है, इसलिए इसको P700 कर रहे हैं। और PS2 की absorption capacity क्या है? तो 680 nm के वेवलेंथ को ये absorb करती है, तो ये जो है P680 कहला सकती है, P680 and it is called P700. Don't be confused in this way. ठीक है, PS1 is the main reaction center. Now if we come to the topic further, we find that reaction center chlorophyll A absorbs 680 nm. Wavelength of red light, due to which electrons are excited and they jump into an orbit farther from the atomic nucleus. These electrons are picked up by an electron acceptor which passes them to electron transport system consisting of cytochromes. How does it happen? Now this is the topic. How does it happen? Like, look here. I tell you very clearly. If you read in the book, then also, and otherwise I can discuss in the notes also. So it has this PS2 system, this is PS1 system, and this is the whole topic is the called Z scheme of light reaction. It is called Z scheme of light reaction. It is also called as non-cyclic photophosphorylation. Non-cyclic, which is consisting of two LHC. One LHC is photosystem 2 and one LHC is photosystem 1.
You have already known that LHC means hundred of pigments along with the proteins. But photosystem 2 has a limit to absorb the sun rays of the wavelength P680, while PS1 will have the capacity to absorb the wavelength of P700. But the function of PS2 is in the first condition and that is followed by PS1. तो पहले किसका काम होता है? PS2 का. So how does it happen? Light is absorbed, the photon is absorbed. Photon means sunlight, the ray of sunlight, the unit of sunlight, and light harvesting complex is absorbing the sun rays. यानी यहाँ पे क्लोरोफिल बी है, केरोटीन है और जैंथोफिल्स हैं, कुछ प्रोटीन्स भी हैं. These are combined together to form the LHC. इसी को हम LHC कहते हैं. Then LHC is transfers it and it is accepted by the electron acceptor molecule. ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जब एक्सेप्ट करते हैं तो इसको ETS सिस्टम के थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू दूसरे LHC के पास भेज देते हैं. तो इस ट्रांसफर के थ्रू they don't utilize the electrons but they convert the adenosine diphosphate to inorganic phosphate. Let us understand in blank pages that I will draw it here and you will understand it very well. I want that you should have a very clear concept of this topic. This is so interesting and I want my students should also be very well in this topic. Photosystem 2. This is photosystem 1. Now here if we say that light is coming, okay, that LHC it is accepted by LHC. LHC क्या करता है? Then it is transfers it to the electron acceptor molecules. This electron acceptor accepts the electron and goes through the ETS, electron transport system में चला जाता है. ये कहाँ चला गया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू यह जो है यहाँ एक LHC में चला है. During this transfer of electrons, the electron is not utilized unless otherwise we can say that ADP combines with one inorganic phosphate forming the ATP. Here ATP is formed. Okay. This LHC again transfers it to photosystem 1 PS1, and here also electron acceptor accepts it, and again there is a downward reaction during which NADP is reduced to NADPH. So during passing of electrons, one ADP is converted to ATP. One ADP is converted to ATP and one NADP is converted to NADPH. These are the final products of light reaction. So first step we can say, first step is the absorption of light. Second step in which we are not written here splitting of water, H2O. H2O में भी जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो गया. तो और थर्ड स्टेप क्या हो गया? रिलीज ऑफ ऑक्सीजन. एंड फोर्थ स्टेप क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ ATP and formation of NADPH. So these are the 4 steps that you have studied in this topic.
that is called Z scheme of light reaction. We can call it non-cyclic photophosphorylation, because here you can see and in cyclic photophosphorylation you will find that when the light is absorbed by the LHC, it is taken by the primary electron acceptor. Here only PS1 will be working, no PS2 will be working. PS2 will not be working. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात अगर हम करें तो ये यहाँ भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको ईटीएस के सिस्टम में ले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ले जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान यहाँ भी एडीपी जो है वो एडीपी विल ज्वाइन विथ वन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड फॉर्म्स द एटीपी. One ATP will be formed and that will be again, it will be transferred to LHC. So in this way we are seeing that this is the cyclic mode of phosphorylation, this is the non-cyclic mode of phosphorylation. Here only PS1 is working and P700 is active only. Here in non-cyclic photophosphorylation both is working, P680 also and P700 is also working. Now we come to the book. Very well. If you find everything, then the same thing that I had discussed in there, we will find here. This whole scheme of the transfer of electrons starting from PS2 uphill to the acceptor, uphill ऊपर जा रहा है acceptor, फिर down the electron transport chain, फिर down हो रहा है electron transport chain के through to the PS1. ये कहाँ जा रहा है, डाउन करके फिर PS1 पे जा रहा है और PS1 में जाकर क्या हो रहा है, फाइनली डाउन हिल टू NADP, फिर वहां से NADP के पास गया, NADPH बन गया. तो दिस इज कॉल्ड जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन and due to its characteristic shape, this shape is formed when all the carriers are placed in a sequence on redox potential scale. Now in the same fashion here you study splitting of water. Splitting of water कब हुआ, splitting of water कब हुआ, जब वहां पर फोटो सिस्टम 2 की बात आई, फोटो सिस्टम 1 में नहीं, फोटो सिस्टम 2. जब हम जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन पढ़ रहे थे, दैट टाइम वी हैड फाइंड दैट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ PS2 ओनली. वाटर इज स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स, आपने भी पढ़ा था. So we can see that electrons needed to replace those removed from photosystem 1 are provided by photosystem 2. The electrons needed to replace. So we understand that how water is split into hydrogen, oxygen and electrons. Okay, which itself is physically located on the inner side of the membrane of thylakoid. Then what is cyclic and non-cyclic photophosphorylation? In cyclic photophosphorylation that I had discussed here, ADP plus IP, ATP, light is falling, first step. Then chlorophyll P700, only chlorophyll P700 will be active here. Here PS2 will not be working. It is accepted by the electron acceptor. The third step, it is going to it is passing through the ETS system, electron transport system. यहाँ पे ADP convert हो गया तो ATP का formation हो गया. तो you can see here कि cyclic photophosphorylation और non cyclic में क्या अंतर था कि यहाँ पे सिर्फ ATP का फॉर्मेशन हुआ, जबकि वहाँ पे ATP और NADPH दोनों की फॉर्मेशन हुई थी. वहाँ PS2 PS1 इन्वॉल्व थे, यहाँ सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है. तो दिस थिंग्स here only P700 is active, there P680 and P700 both are working. Okay, so you can understand PS1. Okay, one thing more, it happens only in the stroma lamella. जैसे अभी क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा है, डायग्राम पढ़ा था, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या पढ़ा है आपने, जो क्लोरोप्लास्ट पढ़ा वो क्लोरोप्लास्ट में आपने पढ़ा कि देयर आर ग्रेना, यू कैन सी हियर ग्रेना,
The grana is also connected to the lamellae through the lamellae, and ये ग्रेना है। आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं। और ये स्ट्रोमा है, इसके अंदर आप राइबोसोम वगैरह बना सकते हैं, लेकिन मेन पार्ट्स हम अभी बताना चाह रहे हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है। दिस इज कॉल्ड ग्रेना। ग्रेना में लाइट रिएक्शन होते हैं, एंड वी हैव स्टडीड दैट स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होते हैं। स्ट्रोमा में क्या होते हैं? डार्क रिएक्शन। The gelatinous substance found inside the chloroplast is called stroma, but this is the thylakoids level. This is the layer of thylakoids and known as grana. But this segment is called the stroma lamellae. इसी को stroma lamellae कहते हैं। और इस स्ट्रोमा लैमेली में यहाँ पे PS1, केवल PS1 ही प्रेजेंट है, PS2 है ही नहीं। स्ट्रोमा लैमेली में क्या होगा? सिर्फ PS1 होगा। तो यहाँ पे लाइट रिएक्शंस हो रहे हैं ग्रेना में। तो ग्रेना में जो लाइट रिएक्शंस हो रहे हैं, तो वहां पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, बट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स इन स्ट्रोमा लैमेली। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड वेल। डोंट बी कंफ्यूज्ड। So cyclic photophosphorylation also occurs when only light of wavelength beyond 680 nm, beyond means 680 से ज्यादा जब रहेगा तभी काम होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का। और ये कहाँ होगा? तो लैमिली में होगा, स्ट्रोमा लैमिली में, न कि ग्रेना में। ओके, सो let it be. Next class we shall study again. Okay, thanks for watching. Before that, before thanks also, I want to give you assignment. Differentiate PS2 and PS1. Differentiate cyclic and non-cyclic photophosphorylation. One question, two question, third question, light reaction. ओके, अभी तो पढ़े नहीं हो आप, लेकिन डार्क रिएक्शन थोड़ा देख सकते हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो you these things you have to do. Notes, you write on you write notes on light reaction के सारे फेज में। डायग्राम्स बनाइए साइक्लिक के, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है ये लिखिए। These are the works that you should do yourself upon the basis of today's lecture. Okay, thank you. Next day again we shall meet. Okay.